these laws. We can also say that the laws of chemical combinations deals with masses of the reactants and products during any physical or chemical changes. Now let's come to the first law, that is law of conservation of mass. This law was given by A. Lavoisier. In this law, he states that in all physical and chemical changes, total mass of products remains equal to total mass of the reactants. Let's take a simple example. Here, if in a container we boil some milk, say 1 liter, and if we add in this boiling milk 100 ml of citric acid, okay, or lemon juice, what will happen? You know, this milk will get separate into solid and liquid portion, that is, we get the cheese out of it, and cheese and some water, but the total mass of the product, that is cheese plus water, is same as the total mass of the milk and lemon juice. So let's take a specific example for this law. Landols verified this experiment using Landols tube. Now you see, Landols tube is a double limb tube let me draw the tube first. This sort of tube where the two tubes are interconnected, and in the first tube we will put a solution of Ag NO3, and in the second tube we'll put a solution of NaCl. Now after sealing the tubes from the top,
First, seal the tubes, then shake the tubes. No reaction takes place, and what happens? Let's see the reaction when AgNO3 solution is mixed with NaCl solution. What happens? AgCl, white precipitates are formed, plus NaNO3 is formed. But the beauty of the equation is this, that the total mass of the products remains equal to mass of the reactants. This verifies the law of conservation of mass. Now here you can see the detailed note and can take your screenshot and note these points. I'll read for you. Law of conservation of mass, that is given by Anthony Lavoisier in 1774. This law states that during any physical or chemical change, the total mass of the products is equal to the total mass of reactants. But it does not hold good for nuclear reactions. We have to exclude nuclear reactions from this law. This law is also known as law of indestructibility of matter, and according to this law, matter can neither be created nor be destroyed. And for verification of law, I have already shown you the experiment which verified by using Landholt's tube. One limb of it contains NaCl solution and other limb contains AgNO3, and the tube is sealed, weighed and shaked. Chemical reaction takes place resulting with white precipitates of AgCl. But the main thing which we have to note is this, that no change in mass of the products formed, hence proves this law. Okay. Now let's start the second law, that is law of definite proportion or constant composition. It was given by Joseph Proust in 1799. This law deals with the composition of different elements present in a compound. For example, a pure chemical substance for example, carbon dioxide. Its composition always same. It's when combined together in fixed or definite proportion by weight. For example, carbon dioxide produced in number of ways, like carbon plus oxygen when heated gives carbon dioxide. Another reaction, when calcium carbonate, limestone, when heated gives calcium oxide plus carbon dioxide.
Now you see, in both the cases, the composition of carbon and oxygen, that is, carbon is one part and oxygen is two part. So 12 is to 32 and the ratio comes 3 is to the 8. So we can conclude here that a pure chemical compound always consists of same elements combined together in fixed proportion by weight. For example, carbon dioxide produced by number of ways, but ratio of carbon and oxygen is always 12 is to 32, that is 3 is to 8 by weight. Or a chemical compound obtained by different sources always contain same percentage of each constituent element. So we can say, if we move here, the carbon dioxide which we have obtained first by combining carbon and oxygen, then by heating calcium carbonate, the composition of carbon dioxide is always same. This is the crux of the law. Now let's talk about the third law. This law gives the relationship between two elements when they form more than one compounds. See, for example, if we take NH3 and N2H4, here you see the fixed mass of nitrogen, and ratio of hydrogen is 3 is to 2, that is fixed mass of nitrogen require hydrogen in ratio 3 is to 2. Now let's have a look at the examples again. Say NH3 and NH2. Here fixed mass of nitrogen requires hydrogen in the ratio 3 is to 2, correct, because nitrogen is fixed. Now in case of second N2N2, that is the nitrogen's mass is fixed. Now when we talk about the oxygen, here oxygen, that is 1 is to 3 ratio. And if we talk about the third example, H2O and H2O2, hydrogen, H2 has the fixed mass, whereas the oxygen ratio is 1 is to 2. So according to this law, we can say if two elements can combine
to form two or more compounds. The masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers, and you have seen the examples already. Now let's talk about the law of reciprocal proportions. It was given by Richter in 1792. This law gives the relationship between masses of elements when more than two elements combine between themselves. You see here, hydrogen and carbon combine to form methane, CH4, right? Also, carbon and oxygen combine to form carbon dioxide. Here, if we see, hydrogen is 4-part and oxygen is 4-part and oxygen is 32, and the final ratio is 1:8. 1:8. Now again, if we combine hydrogen and oxygen, water is formed, and the ratio is 2:16, that is again 1:8. यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो ये CH4 बनाते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन जो है ये फिक्स्ड है, कार्बन इज कॉमन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 4-part है, ऑक्सीजन 2-part है, तो 4:32, दैट इज 1:8। वैसे ही जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं तो वाटर फॉर्म होता है। यहाँ भी हमारी रेशियो जो आती है 2:16, 1:8। ठीक है, इससे पहले कि हम स्टेटमेंट पे जाएं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम सल्फर और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे और बनता है H2S, राइट। वैसे ही हम कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो बनेगा वाटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो H2 है, H2 तो कॉमन है। अब बात करते हैं सल्फर की और ऑक्सीजन की, तो जो रेशियो आती है 32 और 16, 32:16, और इसको हम लिख सकते हैं 2:1, 2:1। अगेन जब हम सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो बनता है SO2। अब SO2 यहाँ भी 32:32 की रेशियो आ रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इट इज 1:1 की रेशियो। अगेन एक स्टेप और आगे चलें तो हम बनाते हैं सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करके SO3 बनता है। तो जो रेशियो यहाँ पे आएगी वो रेशियो होगी 32:16 into 3, that is 48,
तो रेशो हमारी आएगी 2:3। अब यहाँ भी हमने 3 एलिमेंट्स कंबाइन किए, ठीक है, एक बीच में कॉमन है, यहाँ पे हमने कार्बन कॉमन लिया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन कॉमन लिया। तो अब देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है, फिर मैं आपको वापस यहाँ एग्जाम्पल पे लाऊंगा। पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ो और उसको समझो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 एलिमेंट्स say A and B combine separately with the same weight of the third element C, ठीक है, A और B जो है वो कंबाइन हो रहे हैं सेपरेटली C के साथ। A भी C के साथ कंबाइन हो रहा है, B भी C के साथ कंबाइन हो रहा है। अब द रेशियो इन विच दे डू सो इज सेम और सिंपल मल्टीपल of the ratio in which they combine with each other। अब पहले तो वो दोनों एलिमेंट्स देखो, पहले H और A, मान लो ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है, ठीक है। अब ये दोनों पहले क्या कर रहे हैं, C के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ये भी C के साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन भी C के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन भी C के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। हमने वहाँ पे रेशियो देखी उन दोनों की, A और B की। तो उसके बाद जब ये आपस में भी कंबाइन हुए, फिर यहाँ पे आके ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, ठीक है। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं, तो भी जो रेशियो होगी वो सिंपल होगी। ऐसे ही यहाँ पे सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो रेशियो हम देख रहे हैं वो सिंपल आ रही है। लेकिन इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में भी कंबाइन होते हैं, आपस में भी कंबाइन होते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। तो आप ब्यूटी आप देखो कि दोनों ही केसेस में जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो थी। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।